Welcome to lecture number 37. Today we'll see, as I told you earlier, today we'll see the seating arrangement for providing the optimum comfort to the operator, because in previous lecture, yesterday's lecture, we have seen that sitting posture is more effective than standing posture in many of the cases, and so sitting posture also gives the kind of a input to the efficiency of the completion of desired work. So today we'll see that. Now we'll see what exactly sitting posture is all about, what factors we need to see or we need to calculate while designing a sitting posture, whether that person is only working for it on a table or on a particular machine. The sitting posture has to have a good, optimum comfort, which requires as per the uh, work allotted or work desired or output desired. A proper sitting arrangement is related with the sitting posture, first of all. The height of the seat, the working table, and the seat dimensions are of the of maximum significance in case of if we design a workspace layout. So these things are quite important while designing the seating layout. Now, thus, if a good seat may be a chair, or can be a stool also, but should be designed in such a manner so that it will give or it will provide a maximum comfort in terms of backrest. Okay, stool may not be having, but stool cannot be used for long then in case. So it should have a backrest height, rather I should say, then weight distribution, then depth, then width, and these are all the parameters which have a close relationship of the outer dimensions of a seat, which anyone is designing using the ergonomic principles. Now it should allow unrestricted physical movement. There can be some physical movement while working, as well as the quick change of the posture as and when required. Now the designer should bear in the mind about the prospect user. If a person is designing, then we have seen there is huge range of chairs, and every chair has its own application. Industrial chairs are different, like you have seen. Industrial lights are different. Industrial coolers are different. Industrial fans are different. So industrial chairs are also different. If you see a simple chair grandfathers used to use for table work, that is simple, which a carpenter can do. And apart from this, you must have seen on the regular basis, a saloon people will have a separate kind of a chair that is comfortable, again a comfortable one, but as per the requirement of the saloon. And there, the height of the back is like till the neck, or sometimes till the even your head height, maximum height, like a person whose height is like somewhere 6.2 can easily accommodate in that chair. This one is a big chair which can accommodate the maximum dimension of a human body. So, but that is specifically designed for saloon. Yes, we can use those saloon chairs somewhere else also, but at every space and as per the work
what is exactly one has to do. The chair is like different, and ergonomic or luxurious points goes on increasing with the price. So we know the things on the variety of chairs available in the market also. But here what we are studying is the industrial chairs, how they should be, what are all the functions one should have. Like अगर वहाँ वर्क प्लेस में उसको एक पैनल सामने की तरफ और एक पैनल पैनल बगल में है, तो चेयर हैज टू रिवॉल्व अ बिट, वो भी इसमें होना चाहिए. हेड रेस्ट अगर जरूरत है तो हेड रेस्ट भी होना चाहिए. आर्म रेस्ट की जरूरत है तो आर्म रेस्ट भी होना चाहिए. चेयर्स में कम विथ आर्म रेस्ट ऑल्सो. Some chairs doesn't have armrests, so that depends upon the application in a particular area. Seats are specifically designed for the various kind of requirements, such as reading, resting, office work, factory work, driving. As I told you, many seats are there, variety of seats are available. Now the utility of a seat will be enhanced if we work for height and rack. It should be adjustable. Like you have seen that height of the chair can be adjusted or can be extended by using जैसे नाई वाली चेयर में होता है. So or sometimes you have seen that function also comes up in automobile segment. वहाँ पर जो जो हेड रेस्ट वाली पोर्शन होती है, that can be extend to some point, जिससे जो ज़्यादा हाइट वाला बंदा है या सिटिंग के बाद जिसकी अपर बॉडी की हाइट अधिक है, लाइक फ्रॉम हिप, बॉटम हिप टू हेड हाइट, अगर वो किसी के अधिक है तो वो एक दो मतलब 6 इंच के करीब वो बाहर आता है मैक्सिमम. सो 6 इंच कैन की हाइट को मैनेज किया जा सकता है. Likewise, the height of the workbench in relation to a sitting operator should also be properly designed to facilitate the things as easy and uninterrupted working. A good arrangement of the chair we are seeing in the picture also. So this is the basic height. This is the basic height of the chair, where one has to sit. Okay, this is the table height. Now you see the relation between table height and the sitting portion. So this much is required in between. Now this duo has to match themselves, or these both table and chair has to design along, है ना, एक साथ डिजाइन करनी चाहिए. ये टेबल तो वर्किंग टेबल है. अब ये टेबल जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्री में भी हो. वहां पे जो डिस्प्ले पैनल होगा विच कैन बी लाइक इस तरह का कुछ होगा डिस्प्ले पैनल, क्योंकि इस तरह का डिस्प्ले पैनल में वेदर इफ पर्सन इज सिटिंग और स्टैंडिंग पॉस्चर, दोनों में ये पैनल जो इंक्लाइंड पैनल होता है दैट विल बी सीन. यहाँ पे आपके कुछ कंट्रोल्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपके कुछ डिस्प्ले भी हो सकते हैं. सो दे दोज विल बी इजिली मॉनिटर्ड इन both the postures. If someone is feeling like very थका हुआ फील कर रहा है बैठे बैठे भी, तो वो थोड़ी देर स्टैंडिंग पोस्चर में रहेगा, देन इन दैट केस ऑल्सो कि दोनों में वो विजिबल अच्छे से रहेंगे, कंट्रोल्स भी अच्छे से विजिबल रहेंगे और डिस्प्ले भी अच्छे से विजिबल रहेंगे. Another thing is sitting posture, which we are discussing about. This sitting posture requires as per the spine. This back design requires as per the design, and the majorly things is like the eyesight height. ये eyesight height जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है. ये कितनी ऊपर है, ये कैसी है, उस हिसाब से डिजाइनिंग करनी होती है. मतलब ये कह लें इन शॉर्ट, जो हेड हाइट है वो कैसी है, वो आईसाइट हाइट पे आ जाती है. Now let us discuss about working environmental factors. Some working environmental factors are there.
which one has to take care of while designing the work environment or workspace. So number one is illumination, that is light. Light plays an important role in most of the industries और most of the construction part. जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले मैक्सिमाइज किया जाता है सनलाइट के लिए. यू मस्ट हैव सीन कि फैक्ट्रीज में भी विंडोज कई बार होती हैं, कई बार रूफ टॉप से भी रूफ टॉप को भी ट्रांसपेरेंट टुकड़े दिए जाते हैं सो दैट मैक्सिमम सनलाइट या मैक्सिमम डे लाइट कैन कम इनटू. But even then some additional light is required. That depends upon the area, whether we need direct light, indirect light, or diffuse light. As we can see in our diagrams, these three type of lights we normally use: this direct light, indirect light, or diffused light. So these kind of lights we are using, which one to pick, which one to place at which place, at a particular place, apart from the daylight. But even then, if you see, we work at night also because 24 घंटों में 3 शिफ्ट होती हैं और तीनों शिफ्ट में काम करना है, जिसमें से एक शिफ्ट रात की भी होती है, तो वहाँ डे लाइट या सनलाइट हमको कभी नहीं मिलेगी. तो हमको हमेशा एक्सट्रीम के लिए प्लान करना होता है. एक्सट्रीम के प्लान करने के लिए लाइट्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट बिकॉज नाइट शिफ्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है टू मीट आउट द प्रोडक्शन टारगेट्स. रात वाली शिफ्ट में काम करना ही होता है. ठीक है. नाउ द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स seriously affected by these working environments. Now these working environments are like illumination, जो कि लाइट है, फिर ब्राइटनेस है, फिर है ब्राइटनेस सॉरी illumination है, देन कम्स illumination के बाद इट कम्स लाइक नॉइस एंड वाइब्रेशन. ये दो चीजें हैं, illumination or noise and vibration. One light or noise or vibration, because when we work in the industry, the major portion after light comes is vibration and noise. जो सराउंडिंग नॉइस है और वाइब्रेशन है. और नॉइस के लिए हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा था कि नॉइस में बहुत सारी नॉइस आसपास अनवांटेड चल रही होती है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली ऑडिटरी डिस्प्ले कैरीज, और जो ऑडिटरी डिस्प्ले हमारे लिए हो उसमें हमको पहचानना है अनवांटेड नॉइस में से जो वांटेड नॉइस है जो ऑडिटरी डिस्प्ले से हमको मिल रही है, whether it is alarm, buzzer, siren, whatever it is, या जो भी है, any pop out come into जो साउंड के साथ होता है, तो वो सारी चीजें हमको देखने की है. ओके. Now the bad environment may load a worker by physical or mental pressure, or can be a combination many of the times. Yes, it happens. It happens. It happens at the end of the day. Worker may or operator may feel like tired or feel fatigued by physical or mental sense both. Now there's a poor designer, a poor designed environment exactly does not provide the optimum intended service or production rate. And also we need to discuss these environmental conditions and their effect on the human performance. So as I told you, in that sequence, first one is elimination. Now most of the time we see man depends upon the source of light and thus makes use of natural light also, but it varies with as the day passes. I told you, and also sometimes in case of weather conditions, like if it is too cold, तो automatically sunlight सिंपल डिफ्यूज्ड जैसी हो जाती है. माने सन तो है बट दिन में भी चंदा मामा जैसा दिखेगा. सो डे लाइट विल बी मिनिमम, डे लाइट विल बी मैक्सिमम इन दी समर सीजन जो हमको मिलता है. सो देयर मैक्सिमम यूज सन का होगा, बट इवन देन वी नीड. एंड बारिश वाले सीजन में भी अंधेरा रहता है. सो इट्स नॉट लाइक नाइट के टाइम पे हमको डे लाइट नहीं मिल रही. कुछ सीजन्स भी हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, and it is just not possible to regulate the intensity of natural lighting. वो हमारे हाथ में नहीं है. The necessities of artificial light is
very much required. It is very much required, and many industries, use artificial illumination या artificial lights, which क्योंकि जो वहाँ पे ऑप्टिमम लाइट चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, whether nature is not giving, so we have to arrange till the required one, till the point of required one. Now in these cases, one should help operator to work without, without tiring his or her eyes. So the first one is like distribution of intensity of light. Another thing is brightness contrast. Next are the types, and fourth one is the color and reflection. Reflection. Okay. So the first one is distribution and intensity of light. We know as the natural light or the daylight is the source, but if it will get distributed either directly or indirectly, we have to adopt the resource recourse to artificial lightning, definitely. And that we have seen in the diagram, that is direct, indirect, and diffuse. So these are the three kind of lights which we require. डिस्प्ले में भी मैंने आपको बताया था, डिस्प्ले की भी अपनी लाइट होती है, और डे लाइट भी हमको मिलती है। तो हर लोकेशन पे ये हमको जज करना होता है कि कौन सी लाइट इन तीनों में से लगेगी। डायरेक्ट लाइट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम लाइट, बट इट इज एसोसिएटेड विद द लिमिटेशन, क्योंकि ब्राइट है, शेडो कॉन्ट्रास्ट और ग्लेयर भी रहेगा। So the indirect light, which is less bright but causes less fatigue to the eyes, because direct light is like 100 watt का bulb, indirect light is like जैसे बोलते हैं ना 9 वाट का एलईडी बल्ब, और डिफ्यूज्ड लाइट लाइट माना जैसे बोलते हैं ना ऑलमोस्ट 0 वाट का जो बल्ब है मंदिर में या कहीं यूज होता है, तो वो लाइट तो दे रहा होता है लेकिन बहुत ही ठंडा होता है। सो डिफ्यूज लाइट इज लाइक मोर ब्राइट, but indirect it is not at all having any kind of glare at all. कोई चमक कोई चुभन आंखों को नहीं होती, बट ये देखना पड़ता है कि कौन सी कंडीशंस में कौन से यूज होंगे। ओके, now comes the brightness, and before that let us see what is exactly glare. ग्लेयर जो चमक होती है, जो आंखों को चुभती है कई बार, ग्लेयर या रिफ्लेक्शन टाइप से जो लाइट्स होती हैं, तो इट इज हार्मफुल टू द आईज एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय बेटर डिस्ट्रीब्यूशन या एडजस्टमेंट। तो इंडस्ट्रियल लाइट्स में इनके एडजस्टमेंट भी अवेलेबल होते हैं, जैसे फैन में रेगुलेटर्स होते हैं ना, ऐसे इंडस्ट्रियल लाइट्स में रेगुलेटर्स भी होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं उसकी ग्लेयरनेस को, उसकी ब्राइटनेस को, वो अपन कर सकते हैं। So use of several low intensity bulbs are available which have one high intensity lamp. Sometimes use of dull surfaces helps in reducing the glare. That depends कि आसपास के एरिया को हम ऐसा कैसे डिजाइन कर सकते हैं कि ग्लेयरनेस और कम हो जाए, है ना, रिफ्लेक्शन कम मिले हमको, है ना। नेक्स्ट इज ब्राइटनेस कंट्रोल। द डिफरेंस बिटवीन ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट and background is really helpful in finding out the details of the object to facilitate easy working. Okay, now this is all about brightness. Now the types of illumination. Illumination, the general illumination is affected to large extent by color illuminations and surfaces of workplace. We have seen there are many colors of the light. Some comes with yellow light, some come with white light, some come with some other colors also. And that depends upon the illumination and the colors which we are using, and also depends upon the surrounding colors also. So one has to think of these things also, माने पूरा सराउंडिंग जो है, पूरा वर्क प्लेस जो है वो इंटर रिलेटेड होता है।
So the various devices are available, various lights are available like tungsten filament bulbs हैं, fluorescent tubes हैं, mercury discharge lamp है. तो वो डिपेंड करता है कि आर्टिफिशियल लाइट हमको कितना कैसे लेना है. नेक्स्ट इज कलर एंड रिफ्लेक्शन, reflectance. The brightness and visibility of the working area is influenced, purely influenced by the color and its reflection from the room walls or the table or floor area. Sometimes equipment है या जो passages हैं उनके आसपास क्योंकि बे बनी रहती है तो passages रहते हैं, and the reflectance of the surface also depends upon the color, kind of a finish. If it is very super fine finish, then reflection will be more. So in that case, it is depends upon the finish of the finish also, or the position of the light also. Because वो लाइट की पोजीशन कैसी है उस पे भी डिपेंड करेगा. एंड रिफ्लेक्टेंस वैल्यू इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट and incident light. We know, we have studied in chapter light in 10th. So that depends upon both the values, the incident ray and the reflected ray, what we have studied. The values will be defined by the depends upon the surface. किस तरह की surface है. Okay, so this much was the in the current lecture, and will if you have any doubt you can ask me now. By in the next lecture we will study what is all about noise and vibrations happening in and around the workplace, and how it affects the working performance of an operator, and how we can measure the noise, and how we can study the effect of the noise. Then we will see what are all the vibrations and temperature, HVAC part of the working space. So if you have any doubt you can ask me now and we'll reconnect after this.